टैबलेट ग्रेनुलेशन। ओके, यहाँ पे दो टाइप का ग्रेनुलेशन होता है, एक तो होता है ड्राई ग्रेनुलेशन और दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन। एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन। और ये डायरेक्ट compression all in one granulation method, it is nothing but the type of dry granulation. Now see, granules are nothing but the, they are nothing but the, they are a collection, they are agglomerates, they are a bunch of particles held together by binding agent. बाइंडिंग एजेंट क्या करता है कि जो पाउडर के पार्टिकल से मिक्सचर के आके उसको बाउंड करके एक पर्टिकुलर शेप का ये बनता है एग्लोमरेट और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल और ये बंच बनाता है, ठीक है, और ग्रैन्यूल बनता है। सो ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन। नाउ इन केस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन it is also known as a compression granulation. Dry granulation is also known as a compression granulation. Now in case of dry granulation, so final mixture is whatever your blend is there, drug with excipient, glidant, then disintegrating agent, okay, all the things like color, extracts. So everything is finally mixed. Okay, so final powder mixture, drug with excipient or final powder blend. Okay, so it is placed in the roller compactor. जो रोलर मिल होता है आपका उसमें इसको प्लेस करेंगे वो पाउडर को, एंड आफ्टर द मिलिंग यू विल गेट अ फ्लेक्स और कॉम्पैक्ट्स। ये दो रोलर के बीच में जब आप पाउडर को प्रेस करोगे तो वहां पे क्या रहेगा, उसका फ्लेक्स बनेगा या फिर कोई फ्लेक्स बनेगा या फिर कॉम्पैक्ट ऐसा मास बनेगा, बड़ा वाला कॉम्पैक्ट मास। ओके, टू मेक अ कॉम्पैक्ट मास you can pass the powder between two roller or roller mill, or there is another way also. So if this powder is placed in the tableting machine and tablets are formed, but that tablet are not a smaller size, so it is placed in a large capacity tableting machine having large size die. जैसे आपका ये बनता है ईट बनता है, वीट बनता है, जैसे आप वीट बनाते हो, वीट आपका जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो बनते हैं, सो ब्रिक्स, so you have to make a large sized tablet. So for that specially designed the machines are there. So in the dry granulation there are two way. First is nothing but the passing of your final blend or mixture to a roller compactor or roller mill, and to get a flex or compacts, and then break down that compacts into smaller size granules. Pass that through a sieve to get a desired size of granules. Or in the other way, you can place that powder into large size tableting machine to make a large tablet, and then break down that tablet into smaller particle to get a granules. Okay, now in both process what happens, you are getting a sludge, you are getting a mass of large size of your powder. So in the both process you are getting a, in the first process you are getting a compact or flex. In the second process by using large tableting machine, पहले क्या करना है, आपका जो भी पाउडर है उसको पहले ट्रिपल रोल मिल से पास करो तो आपको वहां पे फ्लेक्स मिलेंगे या फिर कॉम्पैक्ट मास मिलेंगे, और बाद में वो मास आप प्लेंटरी मिक्सर जो है उसमें पास करो और आप बाद में डिजायर साइज का ग्रैन्यूल्स मिल सकता है आपको इसको ब्रेक करके। या फिर जो भी पाउडर मिक्सचर है आपका फाइनल ब्लेंड, उसको बड़े वाला टेबलेट मेकिंग मशीन, जैसे नॉर्मल टेबलेट कितना होता है आपका छोटा होता है, एक ऐसा बड़ा वाला टेबलेटिंग मशीन होता है having large capacity of large size of dies and punches. So make a big tablet, okay, and break down that big tablet into smaller tablet. So now that big tablet is known as a sludge, and they have already asked question on this. Sludging occurs in one of the following type of granulation. So they will give you option like dry granulation, wet granulation, direct compression, or none of them. Remember, sludging occurs in the, not sledging, sludging occurs in the dry granulation. यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा है sludging occurs in the dry granulation. Making of sludge or making of big tablet and then breaking of that big tablet into smaller granules known as a desludging. Making of large tablet known as a sludging, and breaking of that large tablet into granules known as a desludging. So sometimes they can ask you sludging and desludging, the process are involved in one of the following types of granulation. So dry granulation will be the answer. And after that, the granules are passed through a desired sieve number 10, 40, etc. Whatever you want. Okay. So whatever size granule you want, you can pass through that. Chilsonator roller compactor.
Chinsonator roller compactor, sorry, Chinsonator roller compactor is most commonly used on the large scale for making dry granules. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Next one is nothing but the weight granulation. As the name indicate, weight granulation means what? So you have to use here a binding solution or binding reagent, binding solution. Weight granulation. So using binder or solvent. Okay, using binder or solvent. ऑन अ लेबोरेटरी स्केल आपने भी अपने कॉलेज में ग्रेनुल्स बनाए होंगे. कैसे बनाते हैं ग्रेनुल्स? जितना भी पाउडर का क्वांटिटी वो सब लेके मिक्स करके स्टार्च पेस्ट बनाते हो आप. स्टार्च पेस्ट उसमें वो पाउडर में डालते हो, फिर उसका एक डंप मास बनाते हो और वो डंप मास 10 नंबर सीव के थ्रू पास करते हो और नीचे पेपर पे वो ग्रेनुल्स मिलते हैं. सो ऑन द स्मॉल स्केल और लेबोरेटरी स्केल, ओके, so powder mixture along with the binder or solvent, a dump mass is prepared and it is passed through a sieve. It is passed through a screen to get a desired size granules. But on the large scale in the industry, there are different kind of granulators. There are different kind of granulators. In the large scale industry, there are different kind of granulators. So first one is the rapid mixer granulator. It is known as the RMG, rapid mixer granulator. RMG, rapid mixer granulator. Then Dysona mixer is there also. Dysona mixer granulator, topo granulator. Okay. Then topo granulator. Then fluidized bed granulator. Fluidized bed granulator. तो ये सब ग्रैनुलेटर के नाम है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है. रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर, डायसोना मिक्सर ग्रैनुलेटर, टोपो ग्रैनुलेटर. सो आउट ऑफ दैट टोपो ग्रैनुलेटर में वैक्यूम यूज करते हैं, ये एक याद रखो. उसके बाद में फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रैनुलेटर. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रैनुलेटर, फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रैनुलेटर. इसमें भी 3 टाइप के फ्लो आता है, टॉप फ्लो, बॉटम फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो. सो आउट ऑफ दैट जो बॉटम फ्लो होता है, so bottom flow or bottom flow in the fluidized bed dryer is known as a Wurster technique. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, Wurster flow or Wurster technique, Wurster flow or Wurster technique. So that is involved in the fluidized bed granulator, particularly bottom spray. Then CF granulator, then Dynuta mixer. These are the different types of your granulating machines. Dynuta mixer processor. Now direct compression. Third method is nothing but direct compression. Actually, it is not a method of granulation. So directly compressible dilute along with the directly compressible drug. It is directly compressed in the tableting machine. So some powders are directly compressible. For example, powders like sodium chloride, potassium chloride, sodium bromide. So these are the powder, they don't require any kind of granulation. So they are directly compressible. Some drugs are also directly compressible. Some excipients are also directly compressible. Now all-in-one granulation method. This is a continuous fluid bed processing and it is done by fluidized bed granulator. जो fluidized bed dryer जो होता है भाई, ये BD, fluidized bed dryer, ड्राइंग में आपने देखा है. So same instrument is used, same process, same working, nothing is different. Only what happens, so whatever there is only arrangement of spray, is solution spray करना है. The process may be of 3 types depending upon the flow of air. Top spray, bottom spray, tangential spray. Top spray, bottom spray, tangential spray. So out of that, bottom spray is known as a Wurster technique. Question इसके ऊपर आ जाता है. Bottom spray is known as a Wurster technique. And tangential spray is known as a Glad air technique. तो इसको याद रखो. टॉप स्प्रे होता है इसमें, ये बीडी में टॉप स्प्रे मतलब अगर जो स्प्रेइंग सोल्यूशन जो है वो ऊपर से भेज रहे हैं, ऊपर से स्प्रे करें. सो इफ स्प्रेइंग सोल्यूशन इज स्प्रेड थ्रू टॉप, दैट इज नोन एज टॉप स्प्रे. इफ स्प्रेइंग रिएजेंट इज और बाइंडिंग रिएजेंट इज स्प्रेड थ्रू द बॉटम, इट इज नोन एज अ रस्टर टेक्निक. एंड इफ it is a spread through a tangential technique, then it is known as a glad air technique. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखो ये टॉप स्प्रे, बॉटम स्प्रे इज नोन एज अ Wurster technique, tangential spray is known as a Glad air technique. So importantly, so again you can I will explain here. Again dry granulation कैसा होता है कि पहले तो इसमें 3 टाइप होता है ड्राई ग्रेनुलेशन में. ड्राई मिक्सिंग, अगर आपके सब कुछ कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल है तो उसमें डायरेक्टली मिक्सिंग करो. प्राइमरी मिक्सिंग, शिफ्टिंग मिक्सिंग एंड फाइनल ब्लेंडिंग.
ब्लेंडिंग मतलब वही, ब्लेंडिंग मतलब क्लोज मिक्सिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, डिफरेंट साइज का पार्टिकल्स होते हैं मिक्स किए हुए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। देन स्लज डिस्लज, दैट इज नोन एज स्लजिंग डिस्लजिंग। वहां पे स्लजिंग डिस्लजिंग, स्लज डिस्लज। उसके बाद में पहले बड़े बड़े टैबलेट बनाओ, उसको ब्रेक करो, पहले स्लज बनाओ, बाद में ब्रेक करो, स्लजिंग डिस्लजिंग। देन शिफ्टिंग मिक्सिंग, sludge, desludge, milling, sizing, and final blending. Then compaction, dry granulation. What you have to do? You have to pass your powder through roller mill to form a compact or flakes. Then that is broken down. Then to get desired size granule. Shifting, mixing, roller compaction, milling, size, and final blending. ये हो गया dry granulation. Now wet granulation का क्या है, दो methods होता है, using aqueous binding agent and then using non-aqueous binding agent. Aqueous binding में क्या है, शिफ्टिंग मिक्सिंग ग्रैनुलेशन ड्राइंग। ग्रैनुल्स ट्राई करना है, मॉइस्चर रिमेंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एक बार। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रैनुल्स शुड बी नॉट मोर देन डेट टेस्ट, ऑप्शन में था 2%, 5%, 3% एक्सट्रैक्ट। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रैनुल्स शुड नॉट बी मोर देन 5%। Moisture content of granules should not be more than 5%. So after making the granules, you have to dry it. So you can see over here again schematic representation of dry granules. So जो भी आपका पाउडर है मिक्स करके आपने जो फाइनली मिक्स किया है, पाउडर along with your expander, it is known as a blend. Now you have two choices over here for dry granulation. First, you can either pass that blend through a roller mill, ठीक है, roller mill to get a this kind of flakes, एक लार्ज साइज का कॉम्पैक्ट और फ्लेक बनेगी। उसके बाद में इसको ब्रेक करो, मिलिंग एंड शिफ्टिंग। मिलिंग मतलब वही साइज रिडक्शन। सो यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस फ्लेक्स एंड पासिंग थ्रू ए डिजायर्ड sieve, you will get a desired size return. एक तो ये हो गया। On the other hand, you can make a large size tablet by using different special tableting machine. So you can make a large size tablet. For example, ये बड़ा साइज का tablet बनता है, ये tableting machine में डाल के बहुत बड़ा tableting machine होता है, इसको बोलते हैं sludging. Making of large tablet from your powder blend known as sludging, and breaking of that large tablet into smaller tablet known as a desludging. And finally then again milling and mixing, and you will get a desired size granule. So that's how there is a granulation again. So you can see over here API और drug, आपका जो भी ओरिजिनल API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यू हैव टू वे करो, आपका जितना भी डिजायर्ड क्वांटिटी लगता है वो API का। उसके बाद में क्या करो, एक्सिपिएंट जो भी डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट एंड ऑल दैट। ओके, so mix your API with the diluent excipient, okay, blending and mixing. Then after that, this you have to do sludging and by using roller compact, sludging or making the compacts. So large sized tablet or sludge. Then you have to pass this. You have to break this and you have to pass through a sieve. You will get a granules. So for example, passing through sieve number 20 granules. After that again different size granule मिलेंगे आपको, so you have to mix them uniformly. So mixing, then you have to add the disintegrant, glycant and lubricant. Then you have to subject this blend to tablet punching machine for compression. Finally you are getting tablet over. So it is known as a compression granulation. It is known as a compression granulation. Now again, so those whose are directly compressible drug with excipient like directly compressible diluent, डिसइंटीग्रेंट एंड ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट। अगर ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, ये इसको डायरेक्टली ड्रग के साथ मिक्स करो, बाद में डायरेक्टली टैबलेट, सो इट इज नोन एज अ डायरेक्ट कंप्रेशन। अगेन वेट ग्रैनुलेशन, सी नाउ दिस में दैट इज नोन एज अ वेट ग्रैनुलेशन। योर ड्रग क्वांटिटी ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट लाइक डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट, देन यू हैव टू यूज बाइंडिंग सॉल्यूशन। तो पहले तो आपका एपीआई वे करो, उसके बाद में ये एक्सिपिएंट जो है डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट उसकी एपीआई के साथ में मिक्स करो, ब्लेंड करो उसको, बाद में आपका बाइंडिंग एजेंट मेक अ डो and that is known as a, okay, then pass this through a screen to get a granulation. Okay, you are getting wet granules over here. Now you have to dry that granules at a 60 degrees Celsius. Now you are getting dry granules and pass through a particular screen like sieve like 20 to get a desired size granule. After that you have to add diluent, disintegrant, glycant, lubricant. Mix it with your granules and then do the compression.
So it is known as a weight granulation technique. So processing steps commonly required in a various tablet preparation. It is nothing but now we'll see tablet tooling. Again, it is a very important part. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है आपका. What is meant by tablet tooling? Now size of tablet, okay, size of tablet is decided by tablet tooling. कि कितना साइज का टैबलेट मिलेगा आपको. ऐसा नहीं कि हर टैबलेट का साइज एक ही होता है. टैबलेट साइज इज डिसाइडेड बाय टैबलेट टूलिंग. व्हाट इज मीन बाय टैबलेट टूलिंग? Tablet tooling is nothing but it is a set of dies and punches. So whatever punches are there, punch, upper punch, lower punch, die cavity, okay? So that is a part of your tablet punching machine. We'll see it in upcoming slide. So the dimensions of your upper punch, lower punch, okay, that will form a die cavity. So that will decide your tablet size. So there are different kind of dimensions, or there are different kind of tablet tooling which will have a set of dies and punches और उसका size रहेगा. तो जैसे there are these type of tablet tooling. First one is a B tooling. Second one is known as a D tooling. Third one is known as a BB tooling, and fourth one is known as a DB tooling. B tooling, D tooling, BB tooling, DB tooling. These are the types of tablet tooling. So from B type of tooling, or B type of in the B type of tooling, there are certain punches. Okay, so what is diameter of punches in the B tooling? 19. Okay, ये diameter होगा. Punch diameter in mm 19 mm. Punch diameter in inch दिया है. Punch, okay, in mm. Okay, then maximum size of capsule or tablet of tablet. So 16 by 19 का tablet यहाँ पे आपको B tooling से मिलेगा. Now D tooling, ये बाकी का बीच में का जो है वो कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये पूछेंगे और लास्ट वाला. So B tooling will have 19 mm punch. Okay, it will produce a tablet size of 19 by 16 by 90 inch. Okay, now next is a D tooling. So remember, D tooling is nothing but known as the largest tooling. Using D tooling you can produce the largest tablet. The largest tablet can be obtained by D tooling, and इसके ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन था. Largest tablet can be obtained by following type of tablet tooling. D tooling, option A, B tooling, DB tooling and BB tooling. ऐसा ऑप्शन थे. Option D, option A, that is a D tooling will give you largest tablet. Okay, remember, okay, it will give you tablet size of 25 by 25 mm in the, okay, 25 by 25. Now C type of tablet tooling, that is known as a BB tooling. You have first, you have second, you have third. BB tooling. Now BB tooling is most commonly used in the pharmaceuticals. So D tooling, using D tooling you are getting largest size tablet. Using BB tooling you are getting, BB tooling is most commonly used in the this industry because इसके उसका जो tablet size मिलता है, because most of the drug का dose जो होता है around 500 मिलीग्राम में रहता है. So उसकी वजह से ये set अच्छा, मतलब उसके लिए. Now last type of is nothing but DB tooling. So using DB tooling you are getting a tablet size of 19 by 19 mm. तो largest tablet कहाँ से मिलता है आपको? D tooling से. Question इसके ऊपर आता है, what is tablet tooling? Tablet tooling is nothing but it is a set of punches with specific diameter. ठीक है, B tooling में जो punches होंगे उसके diameter 19 mm होगा. D tooling में जो होगा उसका diameter क्या होगा? 25.4. जैसे आपका B tooling में जो punches होगा उसका diameter होगा 19 आ गया. DB tooling में जो होगा उसका diameter होगा 25.4. अपर पंच एंड लोअर पंच. ठीक है, अपर पंच लोअर पंच और मैक्सिमम साइज टैबलेट का. बी टूलिंग से आपको मिलेगा 16 बाय 19 mm का टैबलेट. डी टूलिंग से मिलेगा 25 बाय 25 mm का. दैट इज द लार्जेस्ट टैबलेट. दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम डी टूलिंग. देन बीबी टूलिंग से 13 बाय 14 mm एंड बाय बीबी टूलिंग you are DB tooling you are getting 19 by 8. Largest tablet is obtained from D tooling. यहाँ पे याद रखो क्वेश्चन आ चुका है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे. So largest tablet is obtained by following type of tablet tooling. और क्वेश्चन ऐसा बोला, ऐसा भी कर सकते हैं, one of the following tablet tooling is employed to get a largest type tablet. ऐसा घुमा फिरा के वर्ड्स में कंफ्यूज करके आप क्वेश्चन पूछे. तो रिमेंबर, D tooling is the largest tooling. ओके, दो यहाँ पे कितना है? 4 टाइप का टूलिंग होता है. D tooling, B tooling, BB tooling and DB tooling. ये आपको कॉलेज में भी नहीं बोला बच्चों, जहाँ आपको वो वहाँ पे नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ा. नाउ पार्ट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन. पार्ट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन. ओके, लाइक सिंगल पंचिंग मशीन, सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन, सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन और मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन.
अगर आपके टैबलेट पंचिंग मशीन में सिर्फ एक ही अपर पंच, लोअर पंच एंड एक ही डाई है, उसको बोलेंगे सिंगल पंचिंग मशीन और सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन, और उसको ये भी बोलते हैं इसेंट्रिक प्रेस। सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन और इसेंट्रिक प्रेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन इज आल्सो नोन एज इसेंट्रिक प्रेस, ECENTRIC, इसेंट्रिक प्रेस और सिंगल पंचिंग मशीन। मल्टीपल पंचिंग मशीन इज नोन एज अ मल्टी स्टेशन मशीन और रोटरी टैबलेट प्रेस। इसके ऊपर एक 20, 25 या 100 या 200 ऐसे पंच होंगे, पंच अपर पंच, लोअर पंच, तो उसको बोलेंगे रोटरी टैबलेट प्रेस और मल्टी स्टेशन मशीन। और जिसमें सिर्फ एक ही अपर पंच है, एक ही लोअर पंच है, जो आपके कॉलेज में होता है। कभी बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी है जिनमें रोटरी टैबलेट प्रेस भी है, वो बात अलग है कि स्टूडेंट उसको यूज नहीं कर पाते, वो अलग बात है, लेकिन है वहाँ पे दिखाने के लिए कंसर्न। तो सिंगल स्टेशन मशीन इज ओनली वन अपर एंड लोअर पंच, one die cavity. It is also known as eccentric press. Okay, eccentric press or single punch machine. Then if there are a lot of punches, arrangement of upper punch and lower punch, then it is known as a multi-station machine or rotary tablet press. Now we'll see one by one parts of tablet punching machine. The uppermost part is known as a hopper. What is the function of hopper? So it is used for the hopper holds the feeding granules. Okay, it will hold the feeding granules. It is known as a hopper. You can see ये जो ये जो पार्ट है, it is known as a hopper. So it is used for keeping the granules. यहाँ पे इसमें granules रखेंगे आप, ठीक है, वो granules नीचे जाएंगे, यहाँ पे डाई कैविटी रहेगा, यहाँ पे डाई कैविटी रहेगा, यहाँ पे अपर पंच रहेगा, यहाँ पे लोअर पंच रहेगा. Now second part is remember, okay? Our second part is nothing but the dies and punches. Okay? Now यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, who decide the shape and size of tablet to be formed? The following part of tablet machine will decide the size and shape of tablet. टैबलेट का साइज शेप कौन डिसाइड करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. कौन डिसाइड करता है? डाइस. जो डाई होता है टैबलेट का डाई, डाइस डिफाइंस द शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट टू बी फॉर्म्ड इन द टैबलेट पंचिंग मशीन. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है. डाइस डिफाइन द शेप एंड साइज, क्योंकि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फ्लैट, ओवल शेप कौन है, डाई का साइज जैसे होगा वैसे, डाई कैविटी का साइज जैसे होगा वैसा. Now punches are used to compress the granules into tablet in the die cavity. So upper punch and lower punch, they will come together to compress the tablet in die cavity only. Okay. Calm track is, it will guide the movement of punches. जो calm track होता है वो क्या करेगा, गाइड करेगा कि राइट एक में के ऊपर ही लोअर पंच अपर पंच आ रहा है कि नहीं. तो calm track will guide the movement of punches. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. One of the following part of tableting machine will guide the movement of punches. That is a calm track. बार बार बोल रहा हूँ मैं कि ये important है. So calm track will move. Calm track will guide the movement of upper and lower punch. Okay. Then next point is nothing but the feeding mechanism. Okay. तो hopper से, ये hopper जो है आपका, यहाँ से granules कैसे आता है? So that is known as the feeding mechanism. वहाँ पे ये mechanism है, जैसे vibration रहेगा, vibration is the one of the feeding mechanism. Gravity feed. Okay. Parts of tablet, rotary tablets. So it was a part of single punching machine. ये जो देखे अपने इतने पार्ट, it was a single punching machine. But rotary press के भी वैसे ही पार्ट होते हैं, बस एक दो पार्ट एडिशनल होते हैं. Remember, dies will define the shape and size. Calm track will guide the movement of punches. Now rotary tablet press. You can see over here upper punch कहाँ पे, lower punch कहाँ पे. In case of rotary tablet press, अगर वो मल्टी स्टेशन मशीन है और मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन और रोटरी टैबलेट प्रेस, it is used in the industry. Punches and dies, they are fixed on a one circular disc known as a turret. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Upper punch and lower punch, they are fixed together on a circular disc known as a turret in the rotary tablet press. क्वेश्चन आ चुका है. Now hopper का रोल वहाँ पे भी वही रहेगा, to hold the granules and to pass the granules in the die cavity. Die cavity will determine again the size, shape and texture of tablet. यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो. ओके, द टाइम स्पेंड बाय टैबलेट इन die cavity, यहाँ पे लिखा नहीं है, बुक में भी लिखा नहीं है. सो मैं आपको लेक्चर लेने के पहले पढ़ता हूँ, तो इसका एक याद रखो. सो द time spent by tablet in a die cavity
is known as a dwell time. DWEL, dwell time. Dwell time. Okay. So time spent by a tablet in a dye cavity. कितने देर तक टैबलेट डाई कैविटी में रहा उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम. राइट डाउन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ड्वेल टाइम. देन फीड पैडल. पैडल डायरेक्ट द मटेरियल इनटू डाई कैविटी. तो फीड पैडल नाम का ये पार्ट रहता है. सो वट एवर granules are coming from hopper, so that will be directed towards the die cavity by feed pedal. Then punches and dies, they will help to compress the powder into tablet. Arm tract, they will guide the movement of upper punch and lower punch. Capacity controls like pressure, filling, die cavity, etc. वो controls mechanism. Compressor रहेंगे, multi-station punching machine में compressor रहते हैं. They may include pre-compression, main compression mechanism. Ejection cam. Ejection cam के बारे में क्वेश्चन पूछा है. What is the role of ejection cam? So this helps to remove the tablet from die cavity. They say upper punch, lower punch, they will get together to compress the tablet. After compression, one compression cycle, the tablet should be removed from die cavity. That is done by ejection cam. तो पहले एक ग्रैनुल्स आ गया आपके डाई कैविटी में, वहाँ पे अपर पंच लोअर पंच, वहाँ पे पंचिंग करेगा टैबलेट का, टैबलेट बनेगा और वो साइड में हो जाएगा. तो अभी क्या है कि वो टैबलेट बन चुका है, तो वो अगर वहीं पे रहेगा तो दूसरा पंच आके उसको फिर से कॉम्प्रेस करेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टैबलेट निकालना चाहिए. तो उसको निकालने का काम किसका है? इजेक्शन कैम. So ejection cam will help to remove the tablet from die cavity. Take off blade, deflate the tablet into discharge. Control system like control and coordinate most of things. There are different kind of machines used in the industry. Some machines are listed over here. So mini press is the one, Karnavati is the one, Fette is the one, Okasa, they are the examples of rotary tablet press. मिनी प्रेस, कर्नावती, ये नाम है. कर्नावती तो बहुत पुराना वाला है. मिनी प्रेस, कर्नावती, फेटे, ओकासा, these are the names of tablet punching machine. रोटरी टैबलेट प्रेस यूज्ड इन द इंडस्ट्री. सो कुछ इस तरीके से फंक्शनिंग होता है उसमें. तो हॉपर से क्या होगा आपका? सो ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर्स दे विल कम. ओके, सो दे विल कम ओवर हियर. So these are the rollers. They are the rollers on which motors are fixed. ये rollers को motors के थ्रू fixed है, वो घूमते रहते हैं. ये these are known as upper punches. These are known as upper punches. These are known as lower punches. Okay. So when upper punch and lower punch they are separate at the time there is a filling. There is a filling of granules in the die cavity. Or when upper punch and lower punch come together, it will compress the tablet. यहाँ पे देखो, it will compress tablet and it will make a tablet. And again upper punch lower punch will be separate. At the time calm track at the time ejection cam will remove tablet from. So I'm not going to explain all things again over here. So we'll take this quality control test tomorrow.